Okay, so hello everyone. So today we will be doing a session on algebra starting from 3:30, just few seconds left. So I'll be going live after that. I hope you guys are doing well. Right. Good afternoon, Vanshaj. Okay. Okay. So so let's start. And here comes the first question. Let's do it. Anyone? Answer, please. Okay. Gautam is saying infinite, right? Okay. Okay, let me explain this one. Just give me a minute. Okay. So in this question, if you look at it, the first of all, the answer is cannot be determined. Reason. A a lot of people understand that if a to the power b is greater than a to the power c, this implies that b is greater than c. Or if a to the power b is less than a to the power c, then b is less than c. No, it can be the both ways depending on. So if a is greater than 1, then these results are valid. But if a lies between 0 and 1, then the sign of inequality will change. So in this case, if a to the power b is greater than a to the power c, that implies that b is less than c. So answer is cannot be determined. Simple reason. But a lot of people will solve it saying that, yeah, good.
that 3x square plus 7x plus 5 will be less than 2x square plus 12x plus 11. No, इसको लिखना ही गलत हो जाएगा क्योंकि there will be two results to it. ऐसे ही log में भी होता है. So just remember this, huh? So I gave this question because a lot of people are tempted to solve it like this. Let's see, this is less than 0 and इसका result अगर हम number line पे देखें इसके roots हैं 6 और -1. So plus minus plus. So a lot of people say, okay, x lies between 6 and -1 because we are looking for negative values. So 0 to 5, 6 can be the answer a lot of people can give. But this is not how it pans out to be, right? So this is something which you have to understand. Okay, let's do the next one. Okay. Okay, but log is an important part, so you should do it. Waiting for the answers from others. Okay, so shall I? Okay, चलो मैं बताता हूँ. So in such questions, first of all, bases need to be same. और simplified base में जाना चाहिए और इसका जो base है simple base जो जो ये powers में जो ये numbers आते हैं वो 3 की powers में आते हैं तो 3 में ले जाते हैं इसको. तो this will give me 3 cube y
plus 2 log 3 square 81y equal to 20. So this gives me 5 by 3 log y base 3 and this gives me 2 by 2 हो जाएगा ये. So 2 by 2 log 81y equal to 20, right? So it gives me 5 by 3 log y base 3 equal to, ये base 3 है इधर, 2 से cancel हो जाएगा. This will give me log AB होगा log A plus log B. तो log 81 base 3 plus log y base 3, right? This is plus, sorry, plus, is equal to 20. So this will give me, if I am not wrong, right? Everything is in place. Yes, 3 square, 1 by 2. Yes, 81 log y base 3. Yes. Have I missed something? No, I don't think so. 3 square, 1 by 2. Yeah. Okay, perfectly all right. So this gives me 4. So this gives me 5 by 3 log y base 3 plus log y base 3 is equal to, this is 4. So 4 will go here and it'll give me what? It'll give me, it'll give me 16. So if I take log y base 3 common, so I'll get 5 by 3 plus 1. 5 by 3 plus 1 will be 8 by 3 equal to 16. Now this is 2 and 3 2s is 6. So log y base 3 is 6. So y is 3 to the power 6, which is 729. Right? So these questions, these type of questions are often there. So this is how we do it. Yes, Ojasvi, right? Nice. Okay, I hope you understood this problem. Right, let's move on to the next. Okay.
Okay, let's do this. I hope all of you have attempted it. See, in this, first of all, ये अगर मैं पूरा expression check करूं तो this is nothing but ये है x square minus y square का whole square and this is 192, right? So this is what I have. Okay, so now this becomes log of x minus y into x plus y whole square upon 192, which will further give me, yes, so this will give me log of x minus y whole square, x plus y whole square upon 192. Now I know मुझे ये दोनों वैल्यू चाहिए और ये मेरे को मिल जाएंगी आराम से क्योंकि I know that I have this with me. So अगर मैं दोनों तरफ 2xy ऐड कर दूं तो मेरे को 16xy मिल जाएगा and this will be the value of x plus y whole square which is 16xy. Similarly x minus y square के लिए 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा 12xy. So ये बन गए वैल्यू हमारे पास log 12xy into 16xy upon 192. Now 16 into 12 192 होता है गौतम, 196 नहीं, राइट? सो ये हमारा कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई. ये आ जाएगा. सो आंसर इज विच ऑप्शन? आंसर इज सी ऑप्शन. सी इज द करेक्ट. सी इज द करेक्ट आंसर. What is 16 into 12? 16 into 12, 160 plus 32, 192 होगा ना, 196 क्यों? आई होप ये गलतियां नहीं करनी है. Right. Okay, okay. Let's move on to the next. Hmm.
यस, करेक्ट, यस, यशस्वी नाइट. So again, not a very difficult one, but you should remember the process because ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं काफी. So let's take it equal to some value say k. तो ये सब a हो गया k, b हो गया k की पावर हाफ, c हो गया k की पावर 1/3, d हो गया k की पावर 1/4. I just need to substitute the values now. So log, पहले तो बेस की पावर हाफ तो हम बाहर ही कर देते हैं. ये हो गया बी सी, ए बी सी डी. तो हाफ लॉग ए बी सी डी की वैल्यू हो गई k इंटू के टू द पावर हाफ इंटू के टू द पावर 1/3 इंटू के टू द पावर 1/4, और नीचे b और c हो गया k टू द पावर हाफ इंटू के टू द पावर 1/3. This is just to make the base and the number same. That's the process, right? So ये हो गया हाफ हो गया. ये k की पावर अगर हम देखें तो एलसीएम 12 आएगा, पावर ऐड, ये सब ऐड हो जाएंगे नंबर्स. सो ये हो जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, और ये हो जाएगा यहाँ नीचे k की पावर 6 एलसीएम 3 प्लस 2. सो दिस विल गिव मी हाफ इंटू, नंबर हो गया ये ऊपर हो गया 25/12, तो ये तो एज इट इज इधर आ जाएगा, और बेस की पावर 5 से तो ये उल्टा होके आएगा 6/5, और साथ में रह जाएगा हमारे पास लॉग, लॉग भी है इधर, लॉग के बेस के, वो जो कि 1 हो जाएगा. सो अब हम कैंसिल करेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो आंसर इज 5/4. So 5/4 is the correct answer. Yes. So this is how we can do these type of problems very easily. Let's move on to the next. ये भी सिंपल प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ आप, अगर याद है तो ये बहुत इजीली हो जाएगा. ओके, सो फॉर सच क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखा है कि मिनिमम वैल्यू आती है वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स, और वो भी जो मीडियन वाले होते हैं, मिडिल टू. तो या तो 2 पे आएगा या 3 पे आएगा, राइट? तो 1 और 4 पे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 2 और 3. अब ये हो सकता है दोनों पे वैल्यू सेम हो, तो इसलिए दो भी हो सकता है आंसर, एक भी हो सकता है. सो इसलिए अगर मैं 2 रखूंगा तो ये आएगा 1 प्लस 0 प्लस -1 का मॉड तो 1 ही होगा, और -2 का मॉड भी 2 होगा, तो एट x इक्वल टू 2 इट इज कमिंग एज 4.
and at x equal to 3 it is 2 plus 1 plus 0 plus 1 again 4. तो दोनों पे सेम है तो इसलिए आंसर विल बी 2. So there were two values. Okay. Thanks, Kunal. Thanks a lot. Right. And all the best for your future. Okay. So this is how we can do these type of questions, right? Okay. Let's do this one. Yes, Punch. Good. Very nice. Okay, let's do this. Now, infinite geometric progression होता है a r square ऐसे terms होती हैं till infinity. और जब r पे कंडीशन हो कि r 1 और -1 के बीच में हो तो सम इसका होता है a अपॉन 1 माइनस r. तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का एक थोड़ा सा हेर फेर है. सो इसमें लैंग्वेज में बोल रहा है इफ इन एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द टर्म्स, sum of the squares of all the terms. So squares of all the terms are a square r की पावर 4 and so on till infinity. तो इसमें फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर और कॉमन रेशियो है r स्क्वायर, सो 1 माइनस r स्क्वायर, ये हो जाएगा सम.
Now this is equal to twice the स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, वो ये है, तो इसका स्क्वायर, ये बोल रहा है बस वो, नथिंग एल्स, वेरी सिंपल. सो ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर. ये बन गया, ए स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो और 1 माइनस आर का होल, और 1 माइनस आर स्क्वायर होता है 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, और ये आ जाएगा 2 अपॉन इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, तो एक ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 1 माइनस आर इक्वल टू 2 प्लस 2 आर, सो 3 आर हो गया हमारे पास -1, सो आर आ गया -1/3, which is the correct answer. So this is how very simply we can do these kind of problems. So always hunt for such questions, right? You will find one or two such questions always. Okay, let's do this one.
Anyone? ओके, लेट मी डू इट, राइट? सो फर्स्ट टर्म उन्होंने जीरो बताई है, और एपी में फर्स्ट टर्म अगर जीरो है तो सेकंड टर्म होगी जीरो प्लस डी विच इज डी, थर्ड टर्म होगी जीरो प्लस टू डी विच इज टू डी, ऐसे nth टर्म होगी मतलब n माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस हो गया, क्योंकि ए वन जीरो है, फर्स्ट टर्म जीरो है, तो उसके हिसाब से हम सिर्फ डी में ले सकते हैं। अब अगर हम इसको देखें, फर्स्ट पहला वाला जो पार्ट है एक्सप्रेशन का, ये वाला ए थ्री, तो ये हो गया टू डी अपॉन डी विच इज टू बाई वन प्लस थ्री बाई टू प्लस फोर बाई थ्री एंड सो ऑन। ये हो जाएगा n माइनस वन अपॉन n माइनस टू, ये हो जाएगा। दिस इज दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। अब इसमें से मुझे माइनस क्या करना है, ए टू है हमारा डी, वन अपॉन टू डी प्लस वन अपॉन थ्री डी एंड सो ऑन। ये हो जाएगा वन प्लस वन एन माइनस वन इंटू डी, ये बन गया। अब once I've got this, so I have left with 2 plus 3 by 2 plus 4 by 3 and so on, n minus 1 upon n minus 2 माइनस d, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, d हाफ प्लस 1 by 3 plus 1 by 4 and so on, 1 plus n minus 1. This is what I have got. Now this is eventually I have obtained from this series, right? अब आप थ्री बाई टू को अगर देखो तो ये होता है वन प्लस हाफ, फोर बाई थ्री को देखो तो आएगा वन प्लस वन बाई थ्री, राइट, एंड सो ऑन, राइट। सो अगर मैं इसको देखता हूं तो ये बन जाएगा टू प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री एंड सो ऑन। तो इसको अगर मैं n माइनस वन अपॉन n माइनस टू को अगर लिखूं तो प्रॉबेबली ये बनेगा, अगर हम डिवाइड करके लिखें तो n माइनस टू प्लस वन, तो n माइनस टू, वन प्लस वन अपॉन एन माइनस टू, वन प्लस वन अपॉन एन माइनस टू क्या बनेगा, देखो एन माइनस टू प्लस वन, एन माइनस वन अपॉन एन, हाँ, वन प्लस वन अपॉन एन माइनस टू, ये यहाँ से हमें मिला, और ये मिला माइनस वन बाई टू, वन बाई थ्री एंड सो ऑन, एन माइनस वन। तो ये जितनी भी टर्म्स हैं, राइट, हमें जो दिख रही हैं, ये टू से लेके एन माइनस टू तक, टू से लेके एन माइनस टू तक कितनी टर्म्स होंगी, वन से लेके एन माइनस टू तक एन माइनस टू टर्म्स होती, तो टू से लेके एन माइनस टू तक एन माइनस थ्री टर्म्स होंगी। तो ये टू आएगा और वन ऐड होगा कितनी बार, वन प्लस वन हाउ मेनी टाइम्स, ये वन बाई टू, ये तो सब कैंसिल हो जाएगा इधर से, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे एन माइनस टू, और ये नहीं कैंसिल होगा, एन माइनस वन, एन माइनस टू तक कैंसिल हो जाएगा सब। तो ये बच जाएगा टू प्लस वन, कितनी बार ऐड हुआ, एन माइनस थ्री बार, और एंड में रह गया माइनस वन अपॉन n minus 1. So this is what I have got finally. So this will give me n minus 1 minus 1 upon n minus 1. N minus 1 minus 1 upon n minus 1. Hmm. Just a minute.
हैव आई डन ये वन कितनी बार होगा? टू से लेके एन माइनस टू तक, वन से लेके एन माइनस टू तक एन माइनस टू टर्म्स होती है, तो एन माइनस थ्री बार वन ऐड हुआ। ये टू एज इट इज, टू प्लस एन माइनस थ्री माइनस ये वाला लास्ट टर्म बचता है, क्योंकि एन माइनस टू तक कैंसिल होगा, वन अपॉन एन माइनस वन। प्लस में था ना ये सब कुछ, ठीक है। एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन आ रहा है। थिंक देर इज सम मिस्टेक इन दिस, और कैन आई रिफाइन इट अ बिट? No, this is the correct answer. So just remember n minus 1 minus n minus 1 is the correct answer. Because ये बन जाएगा n minus 3 plus 2 is n minus 1 minus of n minus 1, ये आएगा. This is the correct answer. I hope this is clear. हाँ, अज्यूम कर सकते हैं यशस्वी इस केस में, बट थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ना एन तक नहीं है टर्म्स, कोई थ्री से शुरू हो रही है, कभी एन माइनस वन पे रुक जा रही है, तो उसको देखने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो। चलो लेट्स डू दिस वन। बेटा ये सी दिस इज टू, देयर आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस, राइट? सो जस्ट कट दिस वन। इसके ऑप्शंस भी अलग है, तो इसके ऑप्शन नहीं है, इसको गिव मी अ वैल्यू, आंसर देना है इसका, ठीक है?
Okay, 2. Okay, let's understand this. Now they're saying log A base B plus log B base A is 2. Now this is a number and this is its reciprocal. A number plus its reciprocal is always greater than equal to 2 and it will be 2. ये 2 तब होता है जब x 1 हो. तो log A base B अगर 1 है तो इसका मतलब हो गया A equal to B. The moment I know A is equal to B, तो मेरी equation बन गई log A cube upon A square. So answer will be 3 by 2. 3 by 2 is the correct answer. I hope this is clear to all. Yes, yes, yes. 3 by 2. Okay, okay. So this type of question has come in CAT earlier, so I incorporated this. Right. Now do this one.
Okay, so we are running out of time. So in such a problem, see what I can observe is कुछ लोग इसे quadratic भी बनाना चाहेंगे, but वो भी कर सकते हैं. But the easier way of doing this is, since such a question has come earlier, last year. So if I divide it by x square, so I will get x square minus 119 plus 1 by x square equal to 0. So I get a equation x square plus 1 by x square equal to 119. Now it is very easy for me to find x plus 1 by x using this. X plus 1 by x ka whole square will be x square plus 1 by x square plus 2, which is 119 plus 2. So x plus 1 by x will be root of 121, which is 11, since x is positive, it is given to us. Now if I cube both sides, so the cube of this will be 11 cube equal to x cube plus 1 by x cube plus 3 x into 1 by x, x plus 1 by x. And the value of x plus 1 by x is 11. और 11 क्यूब होता है 1331. So 1331 equal to x cube plus 1 by x cube plus 3 into 11. 33 I'll subtract from it. So I'll get 1298 is the answer. I hope this is clear with everyone. Right. Okay, do this, the last question of the day. Let's do this. 2 to the power 31. Okay, let's see. Now they're saying if the real valued function is defined as this, what is the maximum possible value of 16 upon f of x? Now that means I have to minimize this value. In order to maximize 16 upon f of x, मुझे f of x को minimize करना है. और f of x क्या है? हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता है और ना ही जीरो होता है. सो इट मूव्स टुवर्ड्स जीरो. तो ये दे रखा है. अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है तो मुझे इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा और इसको मिनिमाइज करने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर को मिनिमाइज करना पड़ेगा. तो एक्स स्क्वायर को मिनिमाइज अगर मैं करूंगा तो वो जीरो, स्क्वायर वैल्यू हमेशा जीरो होगा. तो ये बन जाएगा -3 का क्यूब -27. So 2 to the power -27 plus 27 will be 2 to the power 0, which is 1. So the maximum value of this function will be 16. 16 is the correct answer. I hope this is clear with everyone. Right, guys?
So that's all for today, right? I'll bring some other some sessions, but I, since the workshops which are still going on in the institute also, so considering that next week I will be taking like 3 workshops in the institute, so I think that will be sufficient. So I think next week I may not be taking any live session, but since there are a lot of workshops I'll be doing in the institute, so make sure you be there and attend them, right? Chalo guys, take care. See you next time.